because we do not have as such option. I do not have the dedicated servers with me right now. So for that, what we can do, we can use the virtualization. Even the companies also are using virtualization thing, right? So they used to just buy uh, good hardware, right? And under that, they can just configure multiple virtual machines. So same ways we are going to do that. Okay, so for that we will be needing one hypervisor, or you can say it as any virtualization tool, and that virtualization tool can be your VMware. Sorry, it can be VMware, it can be Hyper-V, or it can be VirtualBox. Okay. Okay. So virtualization tools. So it can be VMware, it can be Hyper-V, okay, and it can be VirtualBox also. Just mute yourself, Hemant. Oh, sorry, sir. Whenever you have an query, just unmute then only, okay? Okay, sure. Okay, so we can use these virtualization tool. Citrix VS, we can use Citrix as well, right? But for now, we are just going to talk about VMware, Hyper-V and VirtualBox. ठीक है, तो अगर मैं VMware की बात करता हूं तो ये VMware का अपना एक प्रोडक्ट है, right? And it is in demand, guys, right? So if you are going, if you are searching for any of the job in that case, along with system administration, they are asking. सर सर वेट करना, एक्चुअली अभी अमरीक सर का हुआ नहीं इवेंट. Sorry. Guys, I am just do let me know whenever you have any query. Raise your hand, I will unmute you all. Okay, so let me, okay, I do not have the rights to do from here. Okay, I do not have the rights to do from. Yeah, now you Hi can. everyone. Sir, Yeah, please give me the right, sir, please. अच्छा सर, एंड सेकंड थिंग सर, वी डिसाइडेड कि हमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलना है, तो आप दोनों ऑडियंस देख लेना एक बार. श्योर. आप मुझे ये राइट्स दो प्लीज, म्यूट अनम्यूट के. हाँ जी, मैंने राइट्स दे दिया, अभी आपको होस्ट बना दिया. श्योर, थैंक यू. Okay, so guys, whenever you have any query, just raise your hand, I will unmute you. Okay, just a moment. Okay, so we were talking about the VMware, Hyper-V and VirtualBox. So VMware क्या है? VMware अपना एक product है, right? That you have to buy, or you have to buy the license from the VMware itself. It's a vendor-based tool, right? तो VMware इसका vendor है, vendor है who used to work on, or who used to configure this tool for your environment, or you can buy it from the virtual like VMware website itself. ठीक है. Hyper-V, it is a tool of Microsoft, and then VirtualBox is a tool of Oracle. So you can use either of the tool to configure your labs. There will be no any difference. Okay, but in our case we will be using VMware as well as Hyper-V, क्योंकि if you are going for the interview, उसमें वो लोग, they can ask that whether you have working knowledge or whether you have the hands-on experience on VMware or Hyper-V. ठीक है, तो हम लोग ये दोनों टूल कवर करेंगे. 60 to 70% of the labs we are going to configure on VMware, and then rest of the labs we will configure in Hyper-V. Okay, now, okay, if you want to work on
networking labs. See, अगर आपके पास, if you do not have the good configuration of laptop, so in that case you can use the networking labs also. तो वहां पर आपको ऑलरेडी सर्वर्स बने मिलेंगे, यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल द फीचर. तो जो भी हम वहां पर फीचर इंस्टॉल करेंगे दैट यू कैन डू बाय योर ओन. ठीक है, बट आपको वहां पे ऑलरेडी सर्वर बना हुआ मिलेगा, आपको वहां पे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज टू कॉन्फ़िगर आवर लैब्स इज networking labs. I will show you how to access it once you will enroll into this course, right? You will get the access of networking labs, and over there you can perform your practicals, right? And third option, you can use Microsoft Azure. If you don't want to use NK Labs, or if you don't want to use the virtualization tool, then the third option is Azure. But for that, you have to sign up on Azure. You will be needing one credit card so that you will be get a specific amount, and that amount can be used to install the virtual machine or to to use the services that are available on Azure. Right, so on to Azure also, I will let you know how to just create the virtual machine. Right, we will not be covering Azure in this module. So हम Azure का एक अलग से separate batch is running in networking lab. So if you want to opt for Azure, so you can just connect with the networking team and they will help you out to join the Azure batch. Right, but just for MCSA, I will let you know onto Azure how to create the virtual machines and how to access them from your laptops. Okay, so these three things, these three options we do have to work on or to configure our labs. First is this virtualization tools, second is the NK labs, and the third is Azure. Right, and let's talk it about one by one. Okay, meanwhile, let me just check the chat box. Okay, just a second. Okay, you can unmute yourself now. Hello, sir. Yes, yes, please. Sir, I'm having a one doubt. When I install a VMware workstation, in that I need some server operating system, right? Exactly. So I downloaded the server operating system of 2019-16. While I'm installing these two operating system, I'm getting errors. One is that it's a direct going into the UEI to GUF. It's been command prompt. Okay, so you are selecting the graphical based option. Yeah. Sorry, you are selecting the command based system. So you have to That is select the one GUI issue. in that case. So where we have to select? Can you? मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है, ठीक है? अच्छा, thank you. For now, we are just discussing about the tools that we can use. ठीक है, एक बार हम लोग we will start the proper modules. तो उसमें मैं आपको proper कैसे virtual machine बनाना है, और even today also I will let you know कि VMs कैसे बनेंगी VMware में. Okay. ठीक है sir, thank you. Yeah. Hello. Yes, please. Okay, I have one question. In the networking labs, can I save the configuration and the settings? I checked one time, but I can see whenever I close the tab or the lab, need to restart again. So it's possible to save the configuration? Yes, it is possible. You can save the configuration out there also. But I tried to save, but no option. No authorization like that. I will show you. Maybe you will not be having the access for that. So I will let you know, or even later on, we will give you the rights. So over there, you can just save your configuration. Okay. Okay. Thank you. Chalo. Okay. तो अभी के लिए let's work on
कि कैसे हमें अपने वर्चुअल मशीन्स बनाना है। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, आप या तो हाइपर भी यूज कर लो और या फिर आप VMware यूज कर सकते हो। ठीक है, सो VMware में कैसे बनेगा वर्चुअल मशीन? तो सबसे पहले आपको ISO इमेज डाउनलोड करना है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास, सो अगेन आई विल टेल यू. So just go to your browser and you need to look for download Windows Server 2016 or 2019. जो भी करना है, you can just select 2019, right? So you have to just download the evaluation center. जो evaluation center है वो basically आपको 6 months के लिए license provide करता है. So till 6 months you need no to activate the product. You need not to activate the operating system because you will be getting it from the Microsoft itself. ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो भी you have to download the ISO image. तो जैसे मैं 2019 कर रहा हूँ, सेम वे आप 2016 भी कर सकते हो, बिकॉज nowadays हाँ, जो कंपनीज अभी काम कर रही है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन 2016 और कंपनीज आर स्टिल वर्किंग ऑन 2012 R2. ठीक है, बट as per your need, or if you are already working in any of the organization, so according to your need, either you can work on 2019 or you can work on 2016. So it totally depends on you how you want to work on, right? So there will be not any as such a big difference between these operating systems, right? But हाँ, 2016 है, maybe उसमें कुछ extra feature है, and then in 2019 also you will be getting some more features. But at the end, the configuration that you will be making on the servers, that are going to remain same. एक केस ये हो सकता है कि let's suppose if your some of the services are running on 2012 R2. Just take an scenario, right? I'm going back to Paint. एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर ऑलरेडी हमारे पास 2012 R2 सर्वर है, एंड इस सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है? हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर PDC, right? So let's suppose this is server 2012 R2. ठीक है, तो आपकी कंपनी क्या डिसाइड करती है? दे वांट टू वर्क और दे वांट टू माइग्रेट दिस PDC टू 2019 सर्वर. अब ऑब्वियसली ठीक है, 2012 R2 लाइक सपोर्ट उसका एक्सपायर हो गया, राइट? जैसे विंडोज 7 है, वी आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट फॉर विंडोज 7 नाउ. So same way it may possible 2012 R2 का एक्सपायर हो गया सपोर्ट, राइट? सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा? हमें अपनी जो सर्विसेज हैं वो कहाँ मूव करनी होंगी? सर्वर 2019 पे. So let's suppose this one is server 2019. Right? So without the downtime, without taking any downtime, right, we can migrate all these services to 2019. Or maybe if the downtime is needed only maybe in half an hour or maybe in 1 hour, we will be able to migrate all the services from 2012 R2 to 2019. ठीक है, तो जहां कंपनी ऑलरेडी 2012 यूज कर रही है, उस केस में there could be a requirement जहां मैनेजमेंट ये चाहता है कि they want to upgrade their servers. So for this upgradation, right, whatever the services are running on 2012 R2, directly we can migrate these services to server 2019. And this also is the part of our module, right? Practically हम इसको देखेंगे that अगर मेरे पास कुछ already services चल रही है 2012 R2 में, तो मैं उसको कैसे migrate कर सकता हूँ 2019 में. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ये. तो ये ज्यादा वहां पर होगा जहां पर आप ऑलरेडी कुछ ओल्ड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको अपग्रेड करना है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिपेंडेंसी है कुछ 20, अगर कोई 2012 R2 पे सर्विस चल रही है तो वो सिर्फ 2012 R2 पे ही चलेगी. सो देयर इज नॉट एनी डिपेंडेंसी.
right? You can move this service to 2016 also, or you can move the service to 2019 also. There is no dependency. Okay. Yes, 2008 R2 to 2019 also we can do, but we have to go step by step in that case. We can do that. Okay. So this is the scenario it can happen that you have to work on. Guys, just a second. Okay. Gaurav sir, are you there? हाँ जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ जी बताइए। Sir, actually I'm getting some calls that students are not able to join the class. So can you please 1 try? minute, let me try. Okay. ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिक्वायरमेंट आ सकता है मैनेजमेंट की तरफ से हमारी एज ए आईटी टीम। देयर कुड बी रिक्वायरमेंट कि हमें अपना अपग्रेड करना है 2012 R2 टू 2016 और 19। ठीक है, नाउ I will take your questions later on. Okay, first we will just talk about the agenda that we are covering today. तो how to create virtual machine, ठीक है, in case of VMware. So you can see I have multiple virtual machines created into my VMware account, right? So it is totally free of cost. You can download again VMware software, आप इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा, right? And उसको एक्टिवेट कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. I will give you the activation key. So from there you will be able to activate it. अभी के लिए जो आप डाउनलोड करोगे that will be applicable for 30 days only. वो ट्रायल लाइसेंस आपका डाउनलोड होगा, बट अगर उसको आपको एक्टिवेट करना है इसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ. ओके, so to create a new virtual machine, so first of all you can create any Linux machine also here if you are learning Linux from us. So in that case you can create Linux machines as well, right? You can create Windows 10 images, you can create server 16, 19 or whatever server you want to install, और आप लोग Windows 7, Windows 10, Windows 11 सारी आप लोग वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो. सेम वे हाइपर-वी में कर सकते हो, एंड सेम वे यू कैन वर्क ऑन वर्चुअल बॉक्स आल्सो. ठीक है, so to create a new virtual machine, go to file and select new virtual machine. Select this option. Right now, next. So for now you have to select I will install operating system later. So basically what we need to do, हमें यहाँ पर अपना ISO image अपलोड करना है. ठीक है, तभी हमारा सिस्टम, तभी हमारी वर्चुअल मशीन जो होगा वो बूट होगा. जैसे आप लोग जब भी लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, either you are installing operating system from bootable pen drive or maybe from your DVDs, है ना? तो उस वर्चुअल मशीन्स के केस में भी you have to place the ISO images. You have to insert the ISO images. Then only the system, the virtual machine will be able to boot itself. Okay. Okay, Rahul is joined. Thank you. So I need to select I will install operating system later. I will get the option later on also. Or even if you want to select now itself, you can do. Okay, but it is recommended that we should do it later on. Okay, so I will install operating system later, and then next. अच्छा,
अभी आपसे पूछ रहे हैं that what kind of operating system you want to install. अगर मुझे अब लिनक्स इंस्टॉल करना है, so I need to select the Linux and then under these versions I can select the Linux version. If I want to install CentOS, Fedora, right, Red Hat, SUSE, Ubuntu, so you can install Linux machines also from here, right? But we need to work on Microsoft Windows only. So select Microsoft Windows and then select the version of your operating system on which operating system you want to create, right? तो हमें काम करना है 2016 पे, because मैंने अभी ऑलरेडी 2016 डाउनलोड किया हुआ है. बट इफ अगर आपके पास 2019 इमेज है, आप यहाँ पे 2019 सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो सेलेक्ट 2016 एंड देन नेक्स्ट. अब इसको अगर आपको किसी अपना वीएम का नाम देना है, यू कैन सी दीज वीएम नेम, सर्वर 2016, क्लाइंट 10, सर्वर 1, राइट? सो सेम वे यू कैन गिव योर नेम टू वर्चुअल मशीन्स. ठीक है? सो लेट्स सपोज I am naming it as this one is February batch, right? So I'm giving it as Feb batch server 1, right? And the location, it is going to be stored here. See users, username, documents, virtual machines, and then the virtual machine name. By default the location will be there here, but अगर आप उसको चेंज करना है तो आप ब्राउज कर सकते हो और अपनी किसी और ड्राइव में सेलेक्ट करके इसका पाथ चेंज कर सकते हो. ओके, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट रह रहा हूँ इसकी लोकेशन, बिकॉज आई डू हैव द स्पेस इनटू माय सी ड्राइव. बट अगर आपकी सी ड्राइव में स्पेस नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन चेंज द ड्राइव. ठीक है? देन नेक्स्ट, then firmware type we are getting, that is BIOS and UEFI. Nowadays जितने भी systems आते हैं सारे UEFI based आते हैं. Why UEFI? Because UEFI the latest firmware where actually you can use the hard disk which are more than 2 TB. क्योंकि देखो अब सर्वर के केस में हो सकता है there could be a huge storage you want to use, है ना? तो उस केस में क्या है, बायोस जो होता है आपका, बायोस सिर्फ 2 TB तक ही हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा. ओके, बट इन केस ऑफ यूएफआई द हार्ड डिस्क विच आर मोर देन 2 DB और बिलो देन 2 TB ऑल्सो यू कैन यूज द यूएफआई. अब यूएफआई का एक आप कह सकते हो लिमिटेशन कह सकते हो इसको, कि यूएफआई सिर्फ और सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है. ठीक है? तो जैसे आपके पास यहाँ पे फर्मवेयर टाइप आ रहा है बायोस एंड यूएफआई, सेम वे अगर आप हाइपर वी पे वर्चुअल मशीन बना रहे हो, इन दैट केस आपको मिलेगा जनरेशन 1 और जनरेशन 2. कंसेप्ट सेम है, बायोस और यूएफआई, वहां पर आपको जनरेशन 2 सेलेक्ट करना है बस, राइट? क्योंकि सर्वर में हो सकता है आप 2 TB से ज्यादा हार्ड ड्राइव यूज करो, और वो होता ही है, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सेलेक्ट यूएफआई हियर. देन नेक्स्ट, now you can select the number of processor and cores. See, abhi mere paas I am using Intel Core i3 in my processor, sorry in my laptop. ठीक है? बट जब आप सर्वर बाय करते हो, सर्वर प्रोक्योर करते हो, ठीक है, तो उस टाइम आप देखते हो कि आप कितना कोर, 16 कोर का प्रोसेसर चाहिए आपको, 8 कोर प्रोसेसर चाहिए, राइट? तो जब आप सर्वर्स पे लाइफ टाइम सर्वर जब आप प्रोक्योर करोगे, तो उस टाइम आपको, अगर आप उसमें उन सर्वर्स में कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हो, राइट, तो अकॉर्डिंग टू द कोर साइज यू हैव टू गिव कोर्स टू योर वर्चुअल मशीन. मतलब जैसे वो वर्चुअल मशीन कितनी पावरफुल हो, उसका कंप्यूटेशन पावर कितना पावरफुल हो, इट विल डिपेंड ऑन द कोर्स ऑफ द सर्वर, राइट? अभी के लिए मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, सो आई कैन मेक इट एज बाय डिफॉल्ट ओनली. तो बट अगर आप लाइफ टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करोगे, इन दैट केस इट डज मैटर्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सर्वर्स प्रोडक्टिविटी. ठीक है? सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट
by default values here because it will not make as such impact to my laptop, but onto server level if you are going to configure, तब आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. Okay. Then next, okay, then you have to select the RAM size also. तो जो जैसे आप एक हार्डवेयर लैपटॉप खरीदते हो, राइट? लैपटॉप कैसे चलता है? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसमें, राइट? फिर उसके अंदर सीपीयू होना चाहिए, फिर उसके अंदर रैम होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क होनी चाहिए. सो सेम वीएम वर्चुअल मशीन्स के केस में भी आपको ये सब जरूरत है. देखो पहले मैंने सबसे क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आया था कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ मुझे डालना पड़ेगा. ठीक है, देन टाइप ऑफ operating system that I want to install. ठीक है, then next, so this is just the path where it is going to store, then it is the firmware type, then मुझे प्रोसेसर CPU भी तो देना है तभी चलेगा मेरा वर्चुअल मशीन, राइट? सेम वे जब आप अपना लैपटॉप भी चलाते हो तो जब तक उसके अंदर प्रोसेसर ही नहीं होगा, so how you will be able to boot it. ठीक है, तो मतलब आप ये लगा लो कि जो आपका हार्डवेयर पे काम होता है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको वर्चुअल मशीन्स के केस में भी चाहिए. हार्ड डिस्क यहाँ पे चाहिए आपको, रैम आपको यहाँ पे लगेगा, सीपीयू आपको चाहिए, नेटवर्क कार्ड्स आपको चाहिए, एनआईसी कार्ड्स. सो एवरीथिंग यू विल बी एबल टू क्रिएट अंडर योर हाइपरवाइजर. ठीक है, जैसे हम VMware यूज कर रहे हैं तो VMware के केस में हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, रैम साइज एंड देन हार्ड डिस्क साइज, एवरीथिंग वी कैन डू. ओके, BIOS we will be able to boot it Tanmay, but in case if you are working on production environment, so in that case you have to use UEFI, right? And in depth we will talk it about later on that what is the actual difference. I do have the dedicated topic for this dedicated topic to discuss about the difference between BIOS and UEFI. ठीक है, okay, then next, then you have to select the RAM size. okay, तो अभी के लिए हमारे जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे, जो भी हम लैब्स परफॉर्म करेंगे, उसके लिए 2 GB इज मोर देन एनफ. ठीक है, बट अगर आपके पास 32, आई डू हैव 12 GB ऑफ रैम इन माय लैपटॉप, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई एम असाइनिंग द रैम टू माय virtual machine. ठीक है, but if you have 32 GB RAM, in that case you can increase the size of RAM for your virtual machine. ठीक है, बट इन आवर केस 2 GB विल बी मोर देन एनफ, बहुत रहेगा ये. देन नेक्स्ट, अच्छा अभी आ गया आपके पास नेटवर्क टाइप. एज आई टोल्ड यू कि हमें सभी चीज की जरूरत पड़ेगी जो आपको एक हार्डवेयर में जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट नेटवर्क टाइप. सो नेटवर्क टाइप वी आर गेटिंग यूज ब्रिज नेटवर्क, NAT, यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग, डू नॉट यूज एनी नेटवर्क. अब इसके भी अपने तीनों अलग अलग रोल्स हैं. ब्रिज नेटवर्किंग मींस if I want to communicate और if I want कि ये जो ये वर्चुअल मशीन जो भी बनेगी, राइट, मुझे उससे उसको बात करवाना है अपने बेस लैपटॉप से. मतलब वर्चुअल मशीन तो मैं यहां बना रहा हूं ना VMware में, बट मैं चाहता हूं कि जो ये वर्चुअल मशीन बनेगी ये मेरे बेस लैपटॉप से भी बात कर सके, बेस लैपटॉप को कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, तो उस केस से मुझे क्या यूज करना होगा, यूज ब्रिज नेटवर्किंग. देन NAT, दैट इज एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी की रिक्वेस्ट को प्राइवेट में चेंज करते हैं, प्राइवेट को पब्लिक में चेंज करते हैं. तो ये बेसिकली क्या होता है, अब अगर इसका लाइफ टाइम एग्जांपल लेना है तो आप अपने घर का राउटर ले सकते हो. ठीक है, अगर देखो, लेट मी जस्ट कैंसल इट और लेट मी जस्ट कॉन्फ़िगर इट एंड देन आई विल गिव यू द लाइफ टाइम एग्जांपल ऑफ दिस NAT. ठीक है, एंड देन यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग. होस्ट ओनली नेटवर्किंग क्या करेगा, देखो ब्रिज में क्या हो रहा था, मैं बेस मशीन से बात कर पा रहा था. NAT में क्या हो रहा है, मेरे पास अगर एक कोई पब्लिक आईपी है तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं
लाइक उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ सो दैट मेरी जो प्राइवेट आईपीज हैं, तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट का कंसेप्ट भी आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो मेरी जो पब्लिक आईपी की आई वांट कि प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जा सके। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि इंटरनेट किस पे चलता है, पब्लिक आईपी पे, है ना। पब्लिक आईपी पे ही आई एम एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। बट जो मैं घर पे यूज करता हूँ, या फिर अब मुझे पब्लिक आईपी के लिए पैसा भी पे करना पड़ेगा आईएसपी को, राइट। तो अगर मैं कंपनी में 1000 सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उन 1000 सिस्टम्स के लिए मैं पैसा पे करूं आईएसपी को, और सभी 1000 सिस्टम्स के लिए मैं एक पब्लिक आईपी बाय करूं सर्विस प्रोवाइडर से? नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं नैट कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। नैट क्या करेगा, मेरी प्राइवेट आईपीज को भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आइडियली ये क्या कहां कॉन्फ़िगर होता है, आपके राउटर्स पे। बट इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर नैट ऑन सर्वर्स, that also we can do, and we do have the topic of NAT also, कि हम सर्वर पे नेटिंग कैसे कर सकते हैं और फिर एक पब्लिक आईपी से मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमारा लाइफ टाइम हम एग्जांपल और लैब इसकी अपनी मॉड्यूल में परफॉर्म करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग। अब होस्ट ओनली नेटवर्किंग क्या करेगा, इट विल, in case of host only networking, I will be able to communicate with these machines only. in host only का मतलब है सिर्फ मैं इन्हीं machines के साथ बात कर पाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपने बेस लैपटॉप से बात करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। Right, so this host only networking is to isolate your network from outside. आप एक अपनी ही दायरा बना रहे हो, एंड अकॉर्डिंग टू योर रेंज, अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशन, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर वर्चुअल मशीन्स। आप बाहर की दुनिया से बात नहीं कर पाओगे इन केस यू आर सेलेक्टिंग होस्ट ओनली। ठीक है, एंड डू नॉट मतलब आपका नेटवर्क कार्ड कोई होगा ही नहीं। बट ऑब्वियसली अगर आपको सर्वर्स पे काम करना है तो हमें एनआईसी कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग। बट जहां हमें इंटरनेट एक्टिवेट करना होगा वर्चुअल मशीन्स पे, फिर हम अपने ऑप्शंस को चेंज करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट NVMe. So this is the type of hard disk. ठीक है, अगर आपके लैपटॉप में आपके पास SSD है तो आपके पास यहाँ पे NVMe ऑप्शन एनेबल्ड रहेगा। अगर नहीं होगा so in that case you have to use SATA, नॉर्मल SSD जो होती है, राइट। ऑब्वियसली अगर SSD है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रीड राइट स्पीड जो होगी, राइट, दैट विल बी गोना हाई। और बूट स्पीड भी, अगर आपको सिस्टम आपका बूट होता है तो वो भी आपका जल्दी होगा एज कंपेयर टू SSD। ठीक है, so I do have SSD in my laptop, so that is why I'm going to select NVMe. Now next, now create a new virtual disk. See, अब मैं बना रहा हूँ अपना हार्ड डिस्क। सबसे पहले मैंने टाइप सेलेक्ट किया कि मेरे पास हार्ड डिस्क किस टाइप की है, मैंने सेलेक्ट किया NVMe, राइट। अब मुझे क्रिएट करना है हार्ड डिस्क। अब जो ये हार्ड डिस्क लेगा, ये हार्ड डिस्क लेगा मेरे बेस लैपटॉप से। सी, whatever the resource it is taking, it is taking from my base laptop. मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम थी, उस 12 GB में से इसने 2 GB रैम ले लिया। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे लैपटॉप में 512 GB SSD है। अब वो 512 GB SSD में से ही जितना स्पेस मैं अलाउ करूंगा उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और उसकी एक हार्ड डिस्क बना के दे देगा मुझे। ओके, देन नेक्स्ट, एंड नाउ आई हैव टू डिफाइन द साइज। अब ऑब्वियसली साइज भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कितने जीबी, जैसे मैंने रैम का साइज डिफाइन किया, सेम वे आई कैन डिफाइन द साइज फॉर माय हार्ड डिस्क आल्सो। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू 20 GB फॉर मी। 20 GB is again more than enough for us to perform whatever the practicals we are going to do, so 20 GB is more than enough. ठीक है,
Now next and finish. So a new virtual machine is created for us. ठीक है, बट अभी तक हमने ISO इमेज नहीं डाला. अगर आप इसको टर्न ऑन करोगे, ब्लैंक, कुछ भी नहीं चलेगा आपको. ठीक है, जैसे ISO इमेज, जैसे आप बूटेबल पेन ड्राइव लगाते हो या फिर DVD इंसर्ट करते हो अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए, है ना. तो सेम मुझे अपने VMware में भी करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट दिस CD DVD, ठीक है, एंड यूज ISO इमेज फाइल, राइट. और मैं ब्राउज करके जहां भी मेरे पास ISO सेटअप रखा होगा, आई विल सेलेक्ट दैट सेटअप. ठीक है, सो एज आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर विंडोज सर्वर 16, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सर्वर 16 इमेज. अगर आपके पास 19 है, आपको 19 सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, देन ओपन एंड ओके, दैट्स इट. राइट, नाउ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन. So it will start the installation of your operating system. अभी तक सिर्फ VM क्रिएट हुआ था, राइट. अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे. Okay, now next and install now. Okay, so guys, one thing you need to like आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप स्टैंडर्ड इवेल्युएशन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा. यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ग्राफिकल ऑप्शन ओवर देयर. ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी किसी को इशू था तो उन्होंने स्टैंडर्ड इवेल्युएशन सेलेक्ट किया था, दैट इज व्हाई उनको वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट मिल रहा था. ठीक है, बट we will work on command also, we will work on standard evaluation also. ठीक है, once we will be able to cover the major topics of like graphical GUI, right, then we will install command server as well, जहां पर हम PowerShell के थ्रू सर्वर्स इंस्टॉल करेंगे, PowerShell के थ्रू फीचर्स इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए आप GUI डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना. ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी दिस, जस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन. दिस ऑप्शन इज यूजफुल व्हेन अ GUI इज रिक्वायर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, पहले इस पे काम करेंगे, राइट, एंड देन जब हमारा PowerShell का टॉपिक होगा, देन वी विल वर्क ऑन द इवेल्युएशन सर्वर आल्सो. बिकॉज अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इट मे पॉसिबल कि आपके पास कमांड सर्वर हो, कमांड बेस्ड सर्वर हो, तो उस पे काम कैसे करोगे. तो उस पे काम करने के लिए वी मस्ट बी अवेयर ऑफ PowerShell. ठीक है, सो हमारे पास PowerShell का भी टॉपिक है ओवर देयर ऑल्सो. आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज द PowerShell कमांड. By using that commands, you will be able to install the features that are available into server. Okay, select GUI and then next, and I accept the license server. Next, so upgrade in case you do have any already you have a virtual machine, right, and you want to upgrade it to any newer version of operating system, then you have to select upgrade. But as we are going to create a fresh server, a fresh image, तो in case आपको custom select करना है, and जो आपने 20 GB की हार्ड डिस्क बनाई थी, that will be visible here. ठीक है, and then next, and it will start the installation for you. ठीक है, तो meanwhile ये इंस्टॉल होता है. I'll give you the like NAT के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, how NAT works actually. ठीक है,
So let me give you my example. See, there is a router. ठीक है, लेट्स सपोज ये राउटर मेरे पास जो सर्विस है अभी आई एम यूजिंग एयरटेल. ठीक है, अब एयरटेल का एक जो वैन पोर्ट होगा दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. राइट, तो मेरे वैन पोर्ट पे यहां पर एक्चुअली कॉन्फ़िगर्ड है पब्लिक आईपी. दैट इज वाई मैं अपनी रिक्वेस्ट जो सेंड करता हूं प्राइवेट आईपी से, वो जाती तो पब्लिक आईपी के थ्रू ही है इंटरनेट पे. प्राइवेट पे कभी भी हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो बट अब क्या है मेरे केस में, मेरे राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर है, इवन इन योर केस ऑल्सो, यहां पर मेरे राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है, नेटिंग. तो वो मुझे क्या हेल्प कर रहा है, अब मैं अपने राउटर से कनेक्टेड हूं, चाहे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरा फोन कनेक्टेड है, एंड वट एवर द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दिस राउटर, that are actually getting the private range of IP. Let me show you. Properties, right? And here you can see I am getting the IP 192.168.1.3, but ये तो private range है. And इस private range होने के बाद भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. I am connected to the internet. So that is all because of netting. ये मुझे नेट हेल्प कर रहा है. मेरी रिक्वेस्ट यहां से पहले जा रही है राउटर पे. दिस इज माय प्राइवेट आईपी, राइट? लेट्स सपोज इट इज ऑलरेडी आई एम गेटिंग द आईपी ऑफ 192.168.1.3. ठीक है, तो रिक्वेस्ट गई मेरी प्राइवेट आईपी से ही, रिक्वेस्ट जा रही है इसी आईपी से. बट यहां इसने देखा कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ब्राउजर पे टाइप किया facebook.com, तो facebook.com की रिक्वेस्ट गई, राइट? सो facebook.com की रिक्वेस्ट जाएगी मेरे वैन पोर्ट पे, जहां पर एक्चुअली मेरी पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? तो पब्लिक आईपी पे रिक्वेस्ट जाएगी facebook.com की, एंड देन इट विल ट्रांसफर माय रिक्वेस्ट टू द facebook.com, राइट? और प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है, यू कैन गो टू योर ब्राउजर एंड यू कैन टाइप व्हाट इज माय आईपी. What happened? Okay, let me go to another. Sorry. It should be accessible. Yes. So this is the actual IP that is configured onto my router. यहाँ पर इस WAN पोर्ट पे ये पब्लिक IP कॉन्फ़िगर्ड है. Okay, so the technique like NAT is helping me out to communicate from private range to IP to get the internet onto my private range of IP. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे राउटर है, तो इसके बीच में जो हमारे मॉड्यूल, जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर इट कैन बी अ सर्वर ऑल्सो. आप यहाँ पे राउटर की जगह सर्वर लगा सकते हो और सर्वर पे नेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ठीक है, और ये हम अपने लैब्स में देखेंगे दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर द नेटिंग इन केस ऑफ सर्वर्स. So this is actually the concept of netting. Any query, you can write it in your chat box.
Okay, great. ठीक है. So let's get back to our VM. What is the going? Okay, so it is getting restarted. ठीक है, तो ये तो अभी चलो यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं. Meanwhile, I'll show you the networking labs also. So you can go to your browser and you have to log in here. I think मैंने आपको last time भी दिखाया था, right? But let me show you again. Yes, so this is the lab. ठीक है, इसके लिए मैं भी log out कर. Oh sorry, I have to close the lab. Okay, so now close lab. ठीक है, so here you will be getting the option of MCSA labs. ठीक है, यहाँ से you can just select the option and open. Ankit, what actually you need to ask? Can we use servers after routers? I'm not able to get in which context you are asking. It's convert your private IP to public. Okay. So these are the servers you will be able to get it in the networking labs. ठीक है, इसमें ऑलरेडी सर्वर 16 इंस्टॉल्ड है, तो आपको बस क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है सर्वर पे और उसको स्टार्ट कर देना है. राइट, सो आफ्टर स्टार्टिंग द सर्वर आपको इस सर्वर का कंसोल लेना है. ठीक है, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस सर्वर एंड ये सर्वर आपके पास लॉगिन हो जाएगा. तो अभी जितना आपने सब VMware पे किया, VM बनाया, उसको रैम साइज दिया, उसको हार्ड डिस्क दिया, ठीक है, वो सब यहाँ पे करने की आपको जरूरत नहीं है. जैसे Azure में होता है, आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन का लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, दैट्स इट. और जो भी आपको रैम वगैरह देना है वो सब करना है. उसके बाद में ये सब इंस्टॉलेशन, ISO, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सब बना बनाया मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, select like you have to tap on Control Alt and Shift. After tapping Control Alt Shift, you need to select on screen keyboard, then use Control Alt Delete, and then you will be able to log in onto. Again, you can tap on Control Alt Shift and just select none, and now you can log in onto your server. Mm, a second. Yes. So this is the networking labs where you will be able to see multiple servers and operating client systems also. I am typing it in the chat. Okay, so this is going to be the default password. Okay. So this is how you will be able to take the console, right? और यहाँ पर operating system already installed है. You will be able to ask, just wait for a moment, right? Just be ready with your questions, don't worry. Okay. Right, so from here you need to select add roles and features. Next, next,
Obviously you have to give some IPs also to your virtual machine, but for now let it be. Just next. एंड यहाँ से आप अपने जो भी फीचर्स इंस्टॉल करना चाहते हो, लेट्स सपोज यू वांट टू मेक दिस सर्वर एज अ डीएनएस सर्वर, ठीक है, तो आपको सबसे पहले डीएनएस का फीचर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन दिस सर्वर विल बी एबल टू बिकम एज अ डीएनएस सर्वर. इफ लेट्स सपोज यू वांट टू मेक दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, तो उस केस में आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड डीएनएस सर्वर दोनों सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, दोनों फीचर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है. लेट्स सपोज यू वांट टू मेक दिस सर्वर एज द डीएचसीपी सर्वर, कि आपकी जो भी मशीन्स होंगी उनको ऑटोमेटिक आइदर क्या होता है, आइडियली कहाँ होता है ये कॉन्फ़िगर आपके राउटर्स पे, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर योर सर्वर आल्सो कैन एक्ट एज अ राउटर. Okay, so you can make your servers also as a DHCP server. They will also be able to distribute the IPs to your clients. ठीक है. IIS web server, कोई web application आपको host करनी है, that also you can do. So for that you have to install web server IIS feature onto your server. ठीक है. So this is basically the server manager, where actually you will be able to install the feature or install the services that are available onto the server operating system. Okay, so this is the second option you can do. Now the third option is Azure. So for Azure you have to make an account first of all. After making the account you will be needing one credit card so that you will be able to get a specific amount, and then you can use the services of Azure also. ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ VM क्रिएट करना बता सकता हूँ Azure पे, क्योंकि Azure भी अपने आप में एक मॉड्यूल है जहाँ पर हमें जितनी भी सर्विसेज हैं Azure की जो Azure प्रोवाइड करता है वो हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है. बट मैं आपको सिर्फ ये VM बता सकता हूँ कि VM कैसे बनाना है. उसके बाद अगर आपको Azure 104 we are running a separate batch of Azure 104 because see आज नहीं तो कल आपको क्लाउड भी करना ही पड़ेगा, राइट. ऑन प्रेम तो ठीक है, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन ऑन प्रेम सर्वर्स, बट लेटर ऑन आपको क्लाउड पे भी माइग्रेट होना पड़ेगा, राइट. सो वी आर रनिंग अ सेपरेट batch for Azure 104. If you want to join, you can connect with networking teams. Now let's get back to the VMware. Okay, so it is installed. You have to provide a administrator password. Okay, so this is the server that you have made onto your VMware. अच्छा, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके जो भी प्रीवियस पासवर्ड्स होते हैं तो आप वो पासवर्ड्स यूज नहीं कर सकते दोबारा, राइट. आपको कोई यूनिक पासवर्ड ही यूज करना पड़ता है, राइट. सो सेम वे वो डिफाइन कहां पर है, एक्चुअली कहां पर हो रही है ये सब चीजें, वो पासवर्ड पॉलिसीज में मेंशन्ड है दैट यू हैव टू यूज मिनिमम 8 कैरेक्टर्स फॉर योर पासवर्ड, राइट. व्हाट वुड बी द पासवर्ड एक्सपायरी. अब अगर आप इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ वहां पर आपके पास एक पीरियडिक एक रेगुलर लाइक एक इंटरवल पे आपके पास मेल आता होगा दैट यू हैव टू रीसेट योर अकाउंट पासवर्ड, ठीक है. तो ये सब पॉलिसीज ग्रुप पॉलिसीज हैं जो हमें अपनी डोमेन कंट्रोलर पे लगानी है, राइट. सो फ्रॉम देयर you can manage the password length, you can manage the password complexity. complexity means कि आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, आपके पासवर्ड में कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई एक न्यूमेरिक
होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, right? So it comes under the group policies. So for our domain controller also, we can implement these type of policies. ठीक है? So this is your server in case of VMware. ठीक है? यहाँ से आप again you can just scroll, you can just select the feature, add roles and features, and then next, and then again you can install the feature whatever you want. ठीक है? Okay. So this is VMware. अच्छा, अब आता है VMware sorry, Azure के केस में. अच्छा, now I'm unmuting you. Just do let me know your queries. Exactly, Rahul. We will be covering the group policies जो भी companies use करती हैं, right? जितना as per my experience, whatever the policies that we have created, right, or that can be created as per the requirement, we will be covering it. Okay, can you please raise your hand if you want me to unmute you? Yes, Vinay, I'm giving you the rights to unmute. Okay, you can unmute yourself now. यस सर, बेसिकली आपने जैसे अभी बताया कि हम माइग्रेशन करते हैं, तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 12 यूज कर रहा है, तो अभी क्या होता है कि विंडो, अगर मैं विंडो नॉर्मल विंडो की बात करूँ तो विंडो से अगर किसी के पास लाइसेंस वर्जन विंडो 8 है या 7 है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और वो 10 में चला जाता है और 10 से 11 पे आ जाता है, राइट? तो क्या सेम केस सर्वर के साथ भी होता है? जैसे अगर मैं विंडो 12 लेके चल रहा हूँ, मेरे अभी जैसे मेरी अभी ऑर्गेनाइजेशन में विंडो 12 R2 है और कुछ सर्वर पे 16 भी है, तो जो मेरा एडी बना हुआ है, मतलब डीसी जो बना हुआ है, वो मेरा 12 पे है, तो अगर वो डेली बेसिस, वो हर वीक में अपडेट होता रहता है, तो क्या बाय डिफॉल्ट वो 16 पे जा सकता है या हमें उसके लिए फिर 16 का एक सर्वर बनाना पड़ेगा और देन उसके बाद ही हम माइग्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? Exactly. You have to make that server. You have to make a 2016 server first of all. Okay. Right, So and then you can migrate the services. okay, so we have no idea option to automatically update my system update, right? No, you have to make a separate 2016 or 2019. Okay. Thank you. Yes, Rahul, you can unmute yourself. हाँ जी. Okay. Amrik, you can unmute yourself. Hi, sir. Hello. I was having a query regarding just like the operating system 2016 is, every time Microsoft releases a new operating system, because of the vulnerabilities that are included, that are explored by the time. So, are we going to cover that part also in the Yes. servers? So vulnerability, we can configure the WSUS. All right. Right. So through WSUS server, we will be able to get the report, whatever Okay. whatever the operating system is non-compliant, right? We will be able to get the report, and by updating that particular machine with the particular update, we can make it compliant. Okay, any settings related to the weak ciphers that are included in the Windows Server OS? Are you Sorry, can you going please to come cover again? that, or weak ciphers? No, that is the not.
I think that is a part of security, right? Exactly, this is the part of Okay. All right. but I can just give you a brief introduction of some of the tools that we are using in our environment for the vulnerability management. I can give you the brief Okay. introduction. No issues. Is there any option to include, I mean, any information regarding the bare metal operating systems? Yes, that I will let you know in the backup or Okay. backup topic. I will let you know what actually the bare metal does. Okay. All right. Thank you. Yeah, no problem. Yes, Ritu, you can unmute yourself. Hello. Yeah, hi. Hi, sir. Sir, actually, I'm feeling hard to understand the concept. Actually, I'm not from this background. So, please tell me the correct path so that I can work hard and I understand actually the terms you are using in this. I do not understand like completely. Like I'm familiar with the VMware and this kind of word, but when you like used the लाइक बहुत मतलब बहुत सारे आपने टर्म्स ऐसे यूज किए जो इससे रिलेटेड है सो मतलब मुझे उस सब कुछ चीजों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो लाइक मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे मैं कैसे समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा कि सबने जो क्वेश्चंस करे हैं वो लाइक वो ऐसे हैं जो लाइक रिलेटेड हैं इस फील्ड से जॉब कर रहे होंगे शायद में भी या उन्हें कुछ पहले से आता होगा बट मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. No worries, no worries. Need not to worry about it. So this is just an introductory session, right? So जब हम अपना session start करेंगे, okay? Over there I will be explaining. Over there I'm going to start it from very scratch. ठीक है? जिसको networking या जिसको IPs के बारे में भी नहीं पता, I'm going to start it from that point, right? And then you will be able to get into the pace. So जो भी concept होंगे, I will be explaining in the very, बहुत easy like way में and जितना इंटरेक्टिव हो सकेगा आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव राइट एंड वेर जहां भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है यू कैन जस्ट आस्क मी ओवर देयर ओके ओके या okay so these are the two things where I can create our my virtual machine and for Azure yes Rabbani you can unmute yourself hope I am pronouncing it correct okay no response तो अगर आपको Azure पे काम करना है so in that case you need to go to portal.azure.com. Azure is basically the cloud service that is provided by the Microsoft. ठीक है once आपका MCS का concept आपको clear हो जाते हैं that I would highly recommend you to go for Azure. ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो तो जैसे आपने देखा that I got around 15,000 rupees that is around $200 once I will sign up onto the Azure portal. So ये क्यों मिले मुझे so that I can use the services that is provided by the Microsoft. ठीक है Microsoft की यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज है डेटा फैक्ट्री हो गया देन स्टोरेज हो गया राइट देन सिक्योरिटी भी आ गया and there are multiple things that you can do under your you can use Azure Active Directory also AD Connect. ठीक है अगर let's suppose you do have already a Active Directory already you have a AD in your environment and you want to connect that AD to Azure AD या फिर आपको अपनी एग्जिस्टिंग एडी को क्लाउड पे माइग्रेट करना है ठीक है सो देन यू कैन यूज द Azure AD Connect ये भी एक टूल है Azure AD Connect टूल जिसके थ्रू आप अपनी एग्जिस्टिंग एडी को मूव कर सकते हो Azure के साथ कनेक्ट करा सकते हो ठीक है और वहां से आप अपने यूजर्स एंड ऑल सब कुछ मैनेज कर सकते हो
right? Okay, but for now we are going to work on virtual machine. So once signing up on the Microsoft website, okay, sorry, Azure portal.azure website, you have to add your credit card details, right? It will gonna charge 2 rupees from you, right? But वो भी दोबारा क्रेडिट आपका क्रेडिट बैक हो जाएंगे. ओके, 2 रुपए अगर कटेंगे तो वो वापस से आपको ऐड भी हो जाएगा. ओके, आफ्टर साइनिंग अप विद द क्रेडिट कार्ड you will be getting $200. ठीक है, तो वो $200 आप कहाँ यूज कर सकते हो? यहाँ पर सर्विसेज यूज करने के लिए. अंकित, एडी इज एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी. जैसे आपके फोन में फोन बुक होता है और फोन बुक में आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के नंबर सेव करके रखते हो, तो वैसे ही अगर मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, अगर मुझे कंपनी के अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट बनाने हैं, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, अपने कंपनी में जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको डोमेन में लेकर आना है और उनको फिर मैनेज करना है, उनके ऊपर पॉलिसीज लगानी है. सो दैट ऑल आई नीड टू डू अंडर एक्टिव डायरेक्टरी. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कंपनीज का जो एम्प्लॉय का फोन बुक है इट इज एक्चुअली द एक्टिव डायरेक्टरी. Ashish, no, debit card will not work. I tried, but for me it didn't work. ठीक है, so after signing up on Azure, you need to go to virtual machines. ठीक है, so you have to create a new virtual machine. Azure virtual machine we will select. अंकित, किसकी बात कर रहे हो आप सर्वर 16 में? यस, एडी आप सर्वर 16 में बना सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी. मेरे पास अभी बना हुआ है, आई कैन शो यू. ठीक है, मेरे जो प्रीवियस बैचेस में मैं यूज कर रहा हूँ सर्वर्स, आई कैन शो यू. ओके, चलो. So to create a new virtual machine subscription, obviously I'll be selecting free trial, right? But यहाँ पर दो options आपके पास आते हैं. एक तो pay as you go and then the second one is free trial. Free trial, obviously when you will sign up with the your credit card, right? You will be getting the free trial option. Do not select pay as you go. Select free trial only. Pay as you go select करोगे तो it will gonna deduct the amount from your credit card. मुझे मत बोलना फिर पैसा कट गया मेरा, राइट? तो आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन जस्ट क्रिएट द फ्री ट्रायल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल. पे एज यू को वहां पर होगा जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जब आप अपनी कंपनीज में काम करोगे. ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ उन्हीं सर्विसेज का चार्ज करेगा आपसे पैसा जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो. जो सर्विसेज आप यूज नहीं कर रहे तो फॉर दैट सर्विसेज इट विल नॉट गोइंग टू चार्ज. सो दैट इज द पे एज यू गो मॉडल. ठीक है, so you have to create a new resource group in this case. Okay, maybe I will be having already. Okay, so I'm going to select my RG1. So here you can give the virtual machine name. Let's suppose I'm going to give it as my primary domain controller. So what this primary domain controller is, need not to worry about it. I will be explaining later on. Okay, then you have to select the region. I would recommend to select the nearest region to you, because there could be the latency issue. So if I'll select East US, then obviously if the latency issue is there, I will not be able to connect the console. I will not be able to connect to my virtual machine. Okay, so what I'm going to do, I'm going to select Central India. Central India, right? And then availability zone, zone 1. So these things you need to know, need not to worry about it. Once you will be learning the Azure 104 over there, you will be get to know why these features are. Okay, then you have to select the image type. ठीक है, so यहाँ से you will be
able to get the option of images that can be installed, or you can just go to see all images, राइट यहां से आपको सारे इमेजेस मिल जाएंगे. सो जो भी अगर विंडोज सर्वर करना है, यहाँ से विंडोज सर्वर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो. 22 करना है, 2019 करना है, 2016 करना है, राइट. सो यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस फ्रॉम हियर. Okay, 2012 भी you can get. So whatever you want to install, you just need to select that only. So और even अगर आपको Windows 10 बनाना है, Windows 10 भी बना सकते हो. जो भी बनाना है, according to that, you can just create your virtual machine from here. Okay, go back. So let me select Windows Server 16. ठीक है, and it is going to be 64-bit, and then you have to select the CPU size or RAM you want to assign to your operating system. ठीक है, तो यहाँ से आप see all sizes कर सकते हो, and you can see the versions available, VM size available that can be assigned to your virtual machine. जैसे हमने RAM और CPU प्रोवाइड किया था VMware के केस में, ठीक है, तो वो ये वही सेम ऑप्शन है. ओके, सो यू कैन गो विद E सीरीज. ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बिकॉज सी वो आपको जो वो अमाउंट मिलेगा आपको एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, सो दैट आप उसको अपने सारे जो भी प्रैक्टिकल्स हो उनको परफॉर्म कर पाओ. ठीक है, सो ट्राई टू यूज एज मिनिमम एज इट कैन. तो मेरे केस में ऑलरेडी वैसे तो सिलेक्टेड था, व्हाई नीड टू गो फॉर दिस थिंग, बट व्हाट आई कैन डू, I can assign this and select, right? So it will load the charge for me also. You can see 14,848 per month. So if I'm going to select, if I'm going to create the machine with 2 virtual CPUs and 16 GB of memory, in that case, Microsoft will gonna charge me 14,000 rupees, almost 15,000 rupees per month. Okay, then you have to give the username. Let's suppose I'm giving it as 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨1209, right? And the super memorable password. Okay, then just review and create. Okay, we got a validation fail. That is all because of hard disk, I believe, क्योंकि हमने hard disk assign नहीं किया. Go to disk. So this is the option. So you have to select the OS disk type. So I'm selecting SSD and create and attach a new disk. ठीक है, so I'm going to use 101 TB hard disk, or I can change the size also. ठीक है, so for me, for this practical, I'm going to select 32 GB. See, जितना आप ज्यादा रखोगे कंप्यूटेशन पावर, अकॉर्डिंग टू दैट आपका कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा होगा इन केस ऑफ Azure. Okay, now okay, and you will be able to create a new virtual machine. Review and create. See, running the validation. So 20 rupees it is going to charge per hour from me. ठीक है, अच्छा इसको अगर आपको ये पैसा अगर आपको एफिशिएंटली यूज करना है, तो जैसे ही आपने एक लैब परफॉर्म कर ली, जस्ट डिलीट ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस और जस्ट डिलीट ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव क्रिएटेड. रिसोर्सेज कैन बी योर वर्चुअल मशीन्स. ठीक है, जैसे ही आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो अपनी वीएम को डिलीट कर दो, राइट? क्योंकि अगर आप अपनी वीएम को शट डाउन भी रखोगे, मींस अगर आप अपनी वीएम को यूज नहीं भी कर रहे, सो इन दैट केस आल्सो माइक्रोसॉफ्ट आपसे चार्ज करेगा.
तो वो चार्जिंग किसकी कर रहा है? हार्ड डिस्क की, क्योंकि हार्ड डिस्क तो फिर भी यूज हो रही है चाहे आप वीएम ना ऑन करो, ओके राइट, बट जो हार्ड डिस्क उसमें अटैच्ड है, सो माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू चार्ज फॉर दैट हार्ड डिस्क। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे ही आपका लैब हो जाती है, just delete all the virtual machines. Okay, so guys, these three things we can use, these three options we can use to work on our labs, to perform our labs. Majorly I will be using VMware, ठीक है, बट जहां पर आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए हाइपर वी पे, सो हम लोग हाइपर वी पे भी इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके if VM is off, in that case also it will charge you for the storage only, for the hard disk. It is not necessary, Hemant. This is all because if you do not have the good configuration in your laptop, it is not mandatory, right? But it is just for आपको यहाँ से, क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको सर्वर्स पे आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको एज्योर भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप अभी से थोड़ा सा एज्योर पे काम करना शुरू करोगे, आपको थोड़ा बेसिक पता लग जाएंगे, so that if you are opting Azure course, so you will be able to get all the service, you will be able to understand all the services that comes under Azure, ठीक है। तो कोई ऐसा मेरी तरफ से there is no foundation that you want to work on Azure, ठीक है। बट अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, in that case you can use. Okay, so these three things you can use, these three tools, three ways we will be able to configure our labs, right? अच्छा, अब you were asking for Active Directory, ठीक है। I am going back to my VMware. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, that you can use the snapshots, ठीक है। स्नैपशॉट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पुरानी सर्वर के पुराने स्टेट में वापस जा सकते हो, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट द स्नैपशॉट एंड देन यू कैन टॉगल द अर्लियर स्टेज ऑफ योर सर्वर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने अब ये सर्वर 16 है, इसके ऊपर मैंने 26 प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का स्नैपशॉट लिया हुआ। तो व्हाट आई नीड टू डू, मैं ये बताऊंगा स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और क्या करना है, एंड व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। तो मैं सर्वर 16 पे चलता हूँ, राइट क्लिक करो, गो टू स्नैपशॉट्स एंड यू कैन सी पीडीसी, राइट, देन सेलेक्ट पीडीसी। पीडीसी इज एक्चुअली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ओके। तो जब भी आप अपना एक डोमेन बिल्ड करते हो, जब भी आप अपना एक डोमेन कंट्रोलर बिल्ड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, एंड देन यू कैन बिल्ड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर अंडर दैट प्राइमरी डोमेन। यू कैन बिल्ड द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऑल्सो। एडीसी क्या करेगा, अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन है, या लेट्स सपोज देयर इज सम मेंटेनेंस गोइंग ऑन टू योर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो हाउ योर यूजर्स विल बी एबल टू लॉग इन, राइट? सो दे विल बी एबल टू लॉग इन थ्रू योर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बिकॉज पीडीसी क्या करेगा, पीडीसी के अंदर जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट करे होंगे वो क्या होंगे, एडीसी पे रेप्लिकेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू नीड नो टू डू एनीथिंग इन दिस केस, ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेट होंगे। और अगर मेरा पीडीसी कभी भी डाउन होता है या फिर उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तो मेरे यूजर्स जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं वो कहां से कर सकते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के थ्रू, ओके। सो टू शो यू द एक्टिव डायरेक्टरी, just again go to your server manager, or we do have a shortcut also. So what you can do, go to run and you can type dsa.msc. Guys, whatever the shortcuts you can use for your servers, I will give you a list of that shortcuts that you can use, okay. I have prepared a list, and that list can be, you can use, and you can be handy onto your servers by using that shortcuts. So select type dsa.msc and okay.
So here you can see Active Directory users and computers. So I have created a domain with the name lab.com, right? So under this lab.com, if you gonna expand it, I am getting these containers which are built-in computers, domain controllers, foreign security principles, managed security accounts, and then users. ठीक है, तो कंप्यूटर्स कौन होंगे? जो भी कंप्यूटर मेरी डोमेन को ज्वाइन करेंगे, lab.com को जो भी कंप्यूटर ज्वाइन करेगा, दैट विल बी लिस्टेड हेयर. ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे मुझे शो करेगा. और जब एक सिस्टम डोमेन में आ जाएगा, then I am the one who will be having the control on that system. अगर सिस्टम वर्क ग्रुप में है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. बट अगर एक सिस्टम डोमेन में आ गया तो I can do anything on it. I can put any of the security onto that system. ठीक है, तो कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे शो होंगे एंड यूजर्स, जो आपका यूजर एम्प्लॉय आपको जो ज्वाइन करेगा आपकी कंपनी को. लेट्स सपोज lab.com इज मेरी कंपनी है, लैब करके कंपनी है, राइट? तो मेरी कंपनी को एम्प्लॉयज भी मैं रखूंगा, तो आई हैव टू क्रिएट देयर अकाउंट ऑल्सो, राइट? तभी वो अपने सिस्टम्स में लॉग इन करेंगे, वो अपना आउटलुक एक्सेस करेंगे, है ना? तभी वो अपना मेल्स वगैरह किसी को भेज पाएंगे. सो here I will be able to create their account. Let's suppose मेरी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया, अभिषेक. So I will create his account. ठीक है, and I will give him the user logon name. अगर कोई last name है, you can give the last name also. ठीक है, but for me I'm just giving अभिषेक. So अब इस यूजर का पूरा नाम क्या है? यूजर नेम क्या होगा? That is abhishek@lab.com. अब ये यूजर तभी लॉग इन कर पाएगा जब मेरा सिस्टम lab.com का पार्ट होगा. Onto that system only this user will be able to log in. And guys, by default आपके डोमेन के जितने भी सिस्टम्स होंगे उसमें ये यूजर लॉग इन कर सकता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी डोमेन में जितने भी सिस्टम्स होंगे, आपकी डोमेन के जितने भी सिस्टम्स होंगे, उसमें ये अभिषेक यूजर जाके लॉग इन कर सकता है. बट इफ यू वांट टू पुट द रिस्ट्रिक्शन कि भाई ये जो ये अभिषेक यूजर है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही लॉग इन कर पाए, दैट ऑल्सो वी कैन डू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एंड अगेन यू हैव टू गिव सम पासवर्ड टू दिस यूजर. अभी के लिए आप कोई भी पासवर्ड सेट कर दो, राइट? लेटर ऑन यूजर कैन रीसेट बाय इटसेल्फ. नेक्स्ट एंड फिनिश, and you can see Abhishek user account is created in my Active Directory. ठीक है, ये अभी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था, डोंट वरी अबाउट इट. हम इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, राइट? क्या सर्विसेज इसके अंदर हैं, व्हाटएवर, क्या क्या इसके अंदर और हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस वी विल टॉक इट अबाउट लेटर, राइट? एंड जस्ट टू शो यू वन मोर example, what I'm going to do, let me join this Windows system onto the domain lab.com. So again देखो मैंने इसका क्या लिया हुआ है, स्नैपशॉट लिया हुआ है, right? And I'm going back to the fresh 7 machine. Right? So in order to join this system into domain, first of all, I have to make sure that I must be able to communicate with my domain. अगर मैं अपनी डोमेन को पिंग ही नहीं कर पाऊंगा, बात उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये सिस्टम डोमेन का पार्ट नहीं बनेगा. ठीक है, सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इस सिस्टम को आईपी भी असाइन करना पड़ेगा. सो अब आप इसको एज्यूम ऐसे कर सकते हो कि ये आपने ये लैपटॉप है जो आप यूजर को, अभिषेक यूजर को प्रोवाइड करोगे. ठीक है, सो गो टू IP settings. So my DNS is running on 192.168.1.1. ठीक है, so I have to put
1.1 into my DNS address. For now, we are applying the IPs manually. Okay, but once we will be able to configure DHCP server, then हम automatically अपने client machines को IP provide कर सकते हैं. So select 192.168.1.100, right? And for now, no gateways there because I haven't configured any routing. So no gateway is not required, but DNS should be there. 1.1, okay, okay, and close, right? And now try to ping lab.com. Ping lab.com. Okay, just a second. Let me try to ping it with name. Oh, sorry, IP. Okay, 1.1 is not reachable. Let me check the IP settings, network settings, sorry. Okay, it is host only. Cancel it. Oh, IP is not configured properly. Let me go to properties, disable v6. Okay, close, and let me just disable this network card and let me enable it again. Okay, now try to ping 192.168.1.1. There is some issue, I believe. Okay, let's try again. ये क्या आ रहा है? Windows has detected an IP address conflict. हमने 100 IP दिया ना? It should different. 1.100. It is okay. चलो 101 दे देते हैं अभी. Okay, we are getting the response. Maybe 100 मैंने किसी machine को दिया होगा, right? And even now you can try with name as well. pinglab.com. See, we are able to ping. That means this system can become the part of my domain. Okay. So now how to join the system into domain? Just go to the properties of computer, right? And then you will be getting the option change name, domain and services settings. Then you have to select change settings, or we do have the shortcut also for this. ठीक है, जहां पर आपको directly ये यहाँ पर redirect कर देगा. So now you have to select change and then domain, and here you need to put lab.com, right? And now you have to give the approval also. Approval means you have to give the admin credentials here. So type the administrator name and its password. Yes, here we go. So welcome to lab.com, and it will ask a reboot. Restart. Right? So this system, you can see it under your computers also. Refresh. And you can see client 7-PC is joined into your domain.
अब अगर इस सिस्टम पे कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं, so the user will not be able to perform any kind of changes. Only as a admin or the people who will be who will be having the admin credentials or who will be having the admin rights, that user only will be able to perform any kind of changes onto this Windows 7 machine. Right? So let's log in with this user. Just a second, Amrik. I'm giving you the rights. Give me just 5 minutes. Let's try to log in this user into this Windows 7 machine. Okay, so now Abhishek user was there, right? Abhishek, right? Let's try to log in. Control Alt Delete, switch user, go to other user, and here you need to type. Let me make it zoom for you. Okay, this is not getting. Okay, so now you can type Abhishek and its password. See, preparing your desktop means we are able to log in into the system with that user's account. Right? And now we can implement multiple policies also. ठीक है, आप चाहते हो पॉलिसी के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इस सिस्टम में, वी कैन डू दैट. ठीक है, आप चाहते हो पॉलिसी के थ्रू इस सिस्टम में पेन ड्राइव ब्लॉक करना, पेन ड्राइव एक्सेस ब्लॉक करना. जैसे कई कंपनीज में होता है कि आप लैपटॉप पे पेन ड्राइव यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन पॉलिसी वी कैन डिफाइन दैट. आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करना चाहते हो फॉर यूजर्स, यू कैन डू दैट. अब मतलब जो भी पॉलिसी आप अपने डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, सी सो दिस इज द कंसोल एक्चुअली. You need to type gpmc.msc. So this is the group policy management console, right? So from here you can create your policies, and whatever the policies you will create, that will be implemented to your users as well as to your computers. ठीक है, यहां से हम लोग ग्रुप पॉलिसीज बनाते हैं अपनी डोमेन लेवल पे, right? So just minimize it, and you can see user is logged in. But now earlier I was able to change the IP. आपने देखा I was able to give the IP, right? But now if now I'll try to change it, it will gonna ask me the credentials. अगर इसको अब कुछ इंस्टॉल कराना है, so he actually प्रोसीजर क्या होता है कंपनीज में कि आपके यूजर्स को टिकट जनरेट करना पड़ता है. मे बी कुछ कंपनीज जीरा टूल यूज करते हो, राइट? जीरा पे क्या होता है, आपकी टिकट्स क्रिएट होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टिकट, आपको एज अ आईटी टीम मेंबर आपको वो टिकट्स असाइन होती हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट टिकट्स, राइट? तो अब ये यूजर अगर इसको कुछ भी चेंजेस करना है, इसको कुछ भी इंस्टॉलेशन करना है, ये जीरा पे जाके एक टिकट जनरेट करेगा, एंड दैट टिकट विल बी असाइन टू यू, right? And then you have to work on this, work on the ticket as per its need. Okay. Now let's come to your queries. Yes, service now also will be there, exactly. Okay, any queries you have, you can just raise your hand. We are done for the day. So today we just discussed all these things, right? The installation, the procedure, the prerequisites,
why, everything we will discuss in our classes. Yes, we'll make the group later on. You will be getting the updates on your portal itself. Okay, but don't worry, we will do this. Okay, Ashish, you can unmute yourself. Sir, please share VMware license key. हाँ, sure, don't worry. अच्छा, एक काम कर लेते हैं. Let me do one thing. I'm going to create a classroom link. Let me share you the link through which you will be able to get all the documents, all the PPTs, ठीक है, or all the whatever the interview question can be asked. So I'm going to upload it in the Google Classroom. ठीक है. Okay, so you can see I have created the classrooms for my previous batches also, right? So same way I'm going to create it for you guys. Create, continue. So this is going to be the okay. So guys, this link I'm sharing it in your chat box. Okay, so you can join the class. Okay, so you can just join this classroom and I will show you how you will be able to get the documents. So let's suppose this is my January batch, right? Or let me, जो already complete हो चुका है उसका दिखाता हूँ. Okay, so you can go to classwork, right? And you can see assignments, study materials and PPTs, right? So whatever the assignments will be there, I'm going to upload it here, right? Study material will be here, like I'm going to provide MCSA book, PDF book and the PowerShell PDF, right? Along with it, I'm going to upload the PPTs also. ठीक है, जैसे जैसे topics हमारे cover होते जाएंगे, so I'm going to upload the PPTs onto your classroom. Okay, just join the link. I haven't created the interview questions for them. Yes, so this is going to be the interview questions. Okay, so at server level or at topic level also, or for the networking also, whatever the questions can be asked in the interview, that you will be able to find it into your interview questions folder. Okay, so just join the classroom. Okay, I'm going to create the folders over there: assignments, interview questions, PPTs and study material, right? And जो भी अपलोड करूंगा डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ से आप इवन यू कैन डाउनलोड इट. Yes, Amrik, I will give you the access. Don't worry. You will be having. Okay, Amrik, you can unmute yourself. Sir, I was actually asking that can we use Windows 10 instead of Windows 7 for practical? See, we can use, but उसके अंदर सिर्फ एक drawback है. If I want to log in with a new user, it takes time, right? Okay. During my demos, maybe I will not be able to use Windows 10, but आप चाहते हो, we can use Windows 10 also, but it is just going to take the time. तो Windows 10 Yeah. में जब भी आप यूजर लॉगिन करते हो, it keeps on asking something, right? And it keeps Okay. around 5 to 6 minutes to log in.
बट विंडोज 7 में हम इंस्टेंट लॉग इन कर लेते हैं, बट जहां पर हमें विंडोज 10 की जरूरत होगी ओवर देयर वी विल बी यूजिंग विंडोज 10 एज वेल। हाँ, उसमें मैं भी यही चीज आपसे डिस्कस करने वाला था श्योर श्योर। कि इट इज नॉट अबाउट द लॉगिन. If I talk about the SMB version हाँ 1, 2 and 3, तो वहाँ पे there is a much difference between Windows 7 and 10. राइट 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 राइट, कोई बात नहीं, जहां पर हमें जरूरत होगी वी विल बी वर्किंग ऑन 10 आल्सो। ओके, तो अभी जो आपने लिंक शेयर किया है क्लासरूम का, तो इसमें बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनल जीमेल यूज करूंगा तो आई विल हैव एक्सेस टू दिस ऑल द मटेरियल्स. You will be ओके. having, exactly, you will be having, you can download it also. ओके. Okay. Okay, and sir, is there any option to get your contact, or so in case of any, I mean, information about the class? Yes, networking is going to create a group over there. You will be Okay. able to post your queries, and even onto classroom also. So what my previous students used to do, so they used to post their queries onto classroom itself, right? So That will during be our great. classes, yeah, during our class, I used to discuss their queries over, right? So we can do Okay. So actually, sir, to be very frankly, we just want मेरे साथ योगेश जी हैं and Abhilash. We are the workmates. So हमें बेसिकली जो ज़्यादा नॉलेज, डीप डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो दैट इज ऑन द इवेंट्स एंड द लॉगिंग सिस्टम्स ऑफ द सर्वर्स, उसके events based. रिगार्डिंग. I will give you a dedicated like you can say it as a document for event viewer, right? So from there you can just read about the errors you are getting, right, and the resolution also. There are lots of things अभी दिमाग में नहीं आ रही, तो yes, Don't worry, we are burdened. Yeah. abhi just it is a introductory session, right? Yes, yes. Later on, so once we'll start the classes over there, we can discuss your queries. Okay. Okay, Thank you so much. no problem. So, okay, guys, we are done for the day, right? So under the study material, I'm going to upload the PDF book for your MCSA module. Okay. If you want to like go through with it, I would recommend to just go through with that book, right? And you will be getting some scenarios also over there, and you will be getting the assignments also over there. So it is really gonna help you to learn about the servers. Okay. So hope I'm clear to everyone. Yes or no? You can unmute yourself, guys. I have gave you the rights to all. Yes. Yes, sir. Okay, great. So see you tomorrow. Till then, good night. Take care. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Good night. Good night. Good night, everyone.